Hello friends, a very warm welcome to all of you. Welcome back once again on our YouTube channel, your favorite YouTube channel for the preparation of IPMAT. So I believe I am clearly visible and audible to each and every one of you. Hello friends, good evening everyone. Sumedha, good evening. Yes, it is arrangements and distributions. Like the students requested me in the last session, in the last one-shot session that I have taken to conduct a session on arrangements and distribution. So friends, here I am considering your request. So today we are going to discuss some questions, obviously not the basics. We are less than 10 days away from JIPMAT examination. तो मुझे लगता है कि भाई बेसिक्स तो सबके स्ट्रांग हो ही चुके होंगे, सबको पता है अरेंजमेंट्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चंस व्हिच हैव come in the previous year papers of IPMAT and JIPMAT, both of them, right? So we'll be to the point, we'll be solving things that have already been asked, okay? We'll be looking at the format in which they have already been asked, and then we can say that we'll be well prepared for this upcoming examination, JIPMAT followed by IPMAT Rohtak and IPMAT Indore. So I'm so happy to hear about the announcement of marathons. Yes, Unnati. So Unnati, you have heard it. I'll show it to you. So friends, we are going to bring on marathon sessions for all of you. Now, before JIPMAT examination, that means before 26th of April, we'll be conducting two separate sessions on marathon, right? So the first marathon session will be on 21st of April and it will start at 12 noon. Yes, afternoon mein session rakha hai, right? So the first marathon session will be on 21st of April at 12 noon and the second marathon session will be on 23rd of April, right? So note down this particular thing. So the countdown has already begun for marathon sessions because countdown has already started few days back for JIPMAT and IPMAT examination. Now once again I'll tell you that, I'll remind you that we'll be conducting separate marathon sessions for JIPMAT, IPMAT Rohtak and IPMAT Indore, right? So first of all, the first two set of marathon sessions, 21st of April, right? The announcement is already in front of you, and then followed by 23rd of April, both will be conducted at 12 noon, right? So all of you be ready, prepare yourself for these marathon sessions, right? Okay, great. Good evening everyone. All right, nice. Now guest, please, like I could not see your name, but please do not spam the chat box. No, I don't know CA Mr. Manish Mahajan. I'm really sorry, I don't know him. Okay, I don't know what your query is, but let's stick to the topic. Let's stick to this session. Now, last one-shot session for all of you. So like I said that today we'll be solving the questions of arrangements and distributions which have already been asked in the previous year papers of JIPMAT and IPMAT examination. We'll be solving these questions one by one. Now friends, arrangements and distribution is a kind of topic in which you may get a standalone question, एक अकेला question भी आ सकता है, or you may get a question in a set of 2 questions or maybe 3 questions, maximum 4 questions, right? So if I talk about previous year, अगर मैं previous years की बात करूं तो previously JIPMAT and IPMAT में ये वाले इस type के questions, standalone questions भी पूछे गए हैं. They have asked these questions in the form of set. 2 questions का भी set आ चुका है and 3 questions का भी set आ चुका है, right? Over the last few years मैंने 4 questions का set नहीं देखा है, but as many as 3 questions have been asked here. Okay, right? चलिए, so let's begin today's session by solving these questions. So friends, questions एक एक करके appear होंगे. अगर question set based है, so all the directions will be given to you, right? Followed by the questions, right? For every question, I'll be giving you on an average 1 or 1.5 minutes in which you can post your answers in the chat box.
All right. So all the very best. Let's begin solving these questions. Now, let's see. So एक काम करते हैं आज. Now all the students who are solving these questions, what you can do is you can maintain your score. Okay, you can maintain your score by yourself. मैं poll start नहीं करूंगा because I want to see what answer every student is giving. ठीक है? So I want to see your answers. So you may write your answer in the chat box and then अपना score evaluate करते रहो. Okay, and I'll be asking you your score somewhere in the middle of the session or definitely towards the end of the session, right? तो जितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं +1, right? या फिर ऐसा करते हैं ना, for every correct you will get +4, for every wrong you will get -1, right? If you don't attempt that question, then you will get a 0. All right, so mark the answer only if you feel that you are 100% confident. Okay, so +4 for correct and -1 for wrong answer. This is the scoring we'll be doing in today's session. ठीक है, तो मजा आएगा, ये चीज करते हैं. अरे यार नित्यम, डरने की जरूरत नहीं है यार. ठीक है, डरना जायज है. डेफिनेटली यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक. पता है, दो लोगों को डर नहीं लगता. फाइन, जिसकी प्रिपरेशन 100% होती है या फिर जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की होती. राइट, सो 100% प्रिपरेशन इस टाइप के एग्जाम्स में किसी की भी नहीं होती. ठीक है, ये भी एक फैक्ट है. राइट, सो आपको डर लग रहा है, दैट मींस आपने प्रिपरेशन किया है. राइट, एंड यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन. सो इट्स गुड कि डर लग रहा है, थोड़ा बहुत तो डर लगना चाहिए. रेस्ट विल हेल्प यू इन टेमिंग डाउन दिस फियर दैट यू हैव. तो मैराथन सेशंस अटेंड करो. मैराथन सेशन में मैं आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा लास्ट 5-6 डेज में क्या फॉलो करना चाहिए. राइट, बट आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो पीपल कीप इवैल्यूएटिंग योर स्कोर. +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर रॉन्ग एंड 0 फॉर अनअटेम्प्टेड. राइट, ठीक है, चलिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन नाउ. This question I have picked up from JIPMAT 2021. So exact question of JIPMAT 2021. मानसी, रीजनिंग में ना यार सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. अगर लास्ट 4-5 साल के पेपर्स उठा के देखोगे ना, तो क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक. ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये बोलूं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो थोड़ी देर रुको, हाफ एन आवर 45 मिनट्स. लेट्स फिनिश दीज क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं पहले इन पे फोकस करते हैं एंड देन आई टेल यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है मानसी, फेयर एनफ. सो आई बिलीव यू मस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ यू. श्रुति, डीआई भी करने को मिलेगा, चिंता मत करो, अभी मैराथन सेशंस बाकी हैं. ओके, सो अभी जो मैं करवा रहा हूं उन पे फोकस करते हैं ना. So all of you, I'm waiting for your answers, right? So question number 1 already on your screen. Quickly read it through and post your answer. श्रुति, बार बार सेम मैसेज करने से बेटा फायदा नहीं होगा. I'll be answering to general queries after I'm done with today's agenda. ठीक है, सो बीच में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं या आपके क्वेश्चंस सॉल्व करूं, कंफ्यूजन होगा, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का ही. तो पहले हम जो मेरा एजेंडा है, अरेंजमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस सेशन का एजेंडा है, वो कंप्लीट करते हैं एंड देन आई विल आंसर टू योर क्वेरीज. राइट श्रुति, सो इधर फोकस करते हैं. All right. "30 seconds more and then I'll start with the discussion of this one. Okay. All right, let's have a look at it. Now JIPMAT 2021 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है गाइस, ये आपको बिलीव नहीं होगा. ठीक है,
Now, there are four players A, B, C, D. One of them is a cricketer and studies chemistry and biology. A and B play football. Both football players study mathematics. D is a boxer, one football player, and blah blah blah, lot of things. ठीक है, बहुत सारी conditions given है. Now, एक चीज मैं आपको बताता हूं IPMAT and JIPMAT के questions के बारे में. ये चीज अपने दिमाग में रखना, ठीक है. It may be possible that the question statement is very bulky, lengthy. 4 lines है यहाँ पे, ठीक है. 4 lines, more than 4 lines are here, right? Now, what you need to do is you need to go to the question directly at lot of times. बहुत cases में आपको अगर directly questions पे चले जाओगे and questions में find out कर लोगे कि पूछा क्या हुआ है, तो आपका time बहुत ज़्यादा save हो सकता है, right? So basically they are asking you for distribution, but question actually looks like it's a question of distribution, but उससे बहुत easy question है, राइट? आपको ये फाइंड आउट नहीं करना कि ए कौन सा स्पोर्ट खेलता है और उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, बी कौन सा स्पोर्ट खेलता है और उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं. ये फाइंड आउट नहीं करना एक्चुअल में, इंडिविजुअली आपको फाइंड आउट नहीं करना. सो देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ टेबल. सो अगर आप अपने 2 मिनट इसी काम में वेस्ट कर दोगे कि भाई टेबल बनाते हैं एंड हर एक पर्सन ए बी सी या डी का स्पोर्ट्स एंड सब्जेक्ट्स डिसाइड करते हैं, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे चलते हैं. हाउ मेनी गेम्स आर प्लेड एंड द सब्जेक्ट्स स्टडीड बाय द फ्रेंड्स ए बी सी डी. तो 4 फ्रेंड्स थे क्वेश्चन में, इन्होंने गेम्स कितने खेले हैं, राइट, एंड इनके सब्जेक्ट्स कितने हैं, बस यही फाइंड आउट करना है और कुछ फाइंड आउट नहीं करना. हमें टोटल नंबर ऑफ गेम्स एंड टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं गेम्स की बात करता हूं, सो वन ऑफ देम इज अ क्रिकेटर, तो क्रिकेट इज अ गेम. स्टडीज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी छोड़ देते हैं. ए एंड बी प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज अनदर गेम. तो गेम 2 हो चुके हैं, क्रिकेट फुटबॉल. डी इज अ बॉक्सर, बॉक्सिंग करता है, 3 गेम्स. फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल दोबारा आ गया, बॉक्सिंग दोबारा आ गया, राइट. ओके, सो कैन आई से दैट अभी तक सिर्फ 3 गेम्स आए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बॉक्सिंग. डन. सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी कैन नॉट बी द आंसर. ए और बी आंसर नहीं होते, हो सकते बिकॉज 3 गेम्स है, राइट. सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से एक आंसर हो सकता है. अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट, वन ऑफ देम इज अ क्रिकेटर एंड स्टडीज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 2 सब्जेक्ट्स. मैथमेटिक्स इज अनदर सब्जेक्ट. One football player also studies physics, 4 subjects. So chemistry, bio, mathematics and physics, and then accounts, 5 subjects, right? So if you will mark out, if you will strike out the subjects, तो 5 subject हैं यहाँ पे. So option C is also rejected. Correct answer is option D, right? Simple. तो आपको कुछ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है कितने गेम्स हैं और कितने सब्जेक्ट्स हैं. That's it. So D is the correct answer, right? Now the students who have given the answer, तो आपने जो सबसे पहले आंसर लिखा था truthfully सिर्फ वही काउंट करना है, ठीक है. So +4 for correct, -1 for wrong and 0 if you have not attempted. Please keep maintaining your score in your rough sheet. रफ स्पेस पे अपना स्कोर लिखते रहो. फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द स्कोर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज a set of 3 questions, right? A set of 3 questions for which I'll give you 4 minutes, right? 4 मिनट दूंगा, decode करो information को. This is the exact question I have taken from IPMAT Rohtak 2019. So ये भी previous year paper का question है, right? It's a set of 3 questions. Have a look at it. Find out the answers of all the 3 questions. After 4 minutes, I'll start with the discussion.
So people, question number 2, 3 and 4, all of them together on your screen. So you have a chance of scoring 12 marks in this question. An exact question of IPMAT Rohtak 2019. मानव, I'll be telling you, definitely be telling you the strategy, ठीक है, बट अभी यहाँ पे फोकस कर लो. स्ट्रैटेजी यही है कि पढ़ाई पे फोकस करो, राइट? सो इफ यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फोकस करो, नॉलेज इंक्रीज करने में फोकस करो, एंड once we are done with these questions, I'll spend 5 minutes in telling you what you should be doing in the next few days. All right? Now, whenever you have answers, so this is question number 2, this is question number 3, question number 4. So you may write your answers like question number 2, option 1, question number 3, option 2, question number 4, option this, right? So इस तरीके से अपने answers लिखना. In the chat box, do it like this. You may write option 1, option 2, option 3, option 4. यहाँ पे ऑप्शंस मैंने नंबर्स की फॉर्म में लिखे हैं बिकॉज द नेम ऑफ दीज पीपल वर ए बी सी डी ई, राइट? So write your answers in the form of question number 2, option 1, question number 3, option 2, like that. All right, Unnati, nice. Heath, very good. So 2 students who have given all the 3 answers. Now, Unnati, just make a correction like question number 2, 3 and 4. So these are second, third and fourth question, but it's absolutely fine. कोई problem नहीं है. Nityam, Tejasvi, all right. A few more seconds and then we'll start with the discussion of this question. All right, perfect. So let's solve this one. Now, like the previous question, once again, मैं क्या करूंगा यहाँ पे? I'll look at all the 3 questions. Okay? Now, since this is exact question of IPMAT Rohtak, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में. Definitely आ सकता है, but this is a rarest of rare things कि भाई सीधा सीधा complete sequence ही पूछ लिया. Okay? कंप्लीट सीक्वेंस पूछ लिया और आपको 4 फाइनाइट आंसर्स भी दे दिए. सो दिस इज अ वेरी बिग हेल्प फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, इन्होंने सीक्वेंस पूछ लिया, दैट मींस देयर इज अ यूनिक सीक्वेंस होगा यहाँ पे. डन. और वो इन 4 ऑप्शंस में से ही एक होगा, राइट? सो आपको क्या करना है, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सीक्वेंस खुद से डिटरमाइन नहीं करना. विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट आई विल डू इज I'll just check all the conditions. मैं सिर्फ क्वेश्चन में कंडीशंस चेक करूंगा एक एक करके and I'll keep eliminating the options. मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर दूंगा. ठीक है? So it was a blessing, right? कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है. तो जिसने ये क्वेश्चन पहले रीड कर लिया और फिर वो डायरेक्शंस पे गया तो उसका फायदा हो जाएगा. ठीक है? फायदा कैसे होगा? Let's start doing this.
So A B C D E are to be staged from Monday to Friday. Monday से Friday 5 दिन है, 5 plays हैं. Okay. On each day, only one play will be staged. Perfect. D or E should not be either the first or the last. D और E से starting और ending नहीं हो सकती. D से start हो रहा है, I'll reject this option. Okay, because it is starting with D. Question बोल रहा है D और E से begin और end नहीं हो सकता. Right? Option 3 is safe. Option 2 is safe. Option 1 is safe. Right? I could eliminate one option. आगे चलते हैं. E should be immediately followed by C. E के बाद C होना चाहिए, immediately बाद होना चाहिए. So E के बाद C है, perfect. E के बाद C है, E के बाद C है. तीनों options बच गए. आगे चलते हैं. B should be staged immediately after D. So D के immediately बाद B होना चाहिए. तो it should be D and then B. Okay? यहां पे सीक्वेंस गड़बड़ हो गई है, क्रॉस कर देते हैं. ये सीक्वेंस सही है और ये सीक्वेंस सही है. राइट. सो दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं. वन प्ले इज स्टेज्ड बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के बीच में एक प्ले होना चाहिए. ऑप्शन 2 में देयर आर 3 प्लेज बिटवीन देम. ऑप्शन 2 इज एलिमिनेटेड. सो देखो कितना मजे की बात है ना. जितना टाइम मुझे इन कंडीशंस को रीड करने में लगा, उतना ही टाइम मुझे ये वाला आंसर निकालने में लगा. एंड मेरे पास सीक्वेंस तैयार है. सो नाउ द सीक्वेंस शुड बी A, D, B, E, C. राइट. ऑप्शन 1 की वजह से मुझे पता लग गया दैट दिस इज द सीक्वेंस. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज ऑप्शन 1. राइट. अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अब तो पता ही लग गया ना कि यही सीक्वेंस होगा. सो दिस वन एंड दिस वन आई कैन आंसर टू दीज टू क्वेश्चंस क्विकली. ठीक है. सोचो कितना टाइम सेव हुआ है. हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ ऑप्शंस को चेक करना पड़ा. राइट. ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग यू, इस टाइप का क्वेश्चन जो कंप्लीट सीक्वेंस पूछ लेता है आपसे, तो ये रेयरली मिलेगा आपको, बहुत कम इंस्टेंसेस में. बट आईपीमैट रोहतक के एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो वी कैन नॉट डाउट द पीपल हु आर सेटिंग द पेपर. ठीक है. चलो अब फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं. विच इज द फर्स्ट प्ले टू बी स्टेज्ड? ऑब्वियसली ए. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. राइट. Last question, which play was staged on Wednesday? Monday, Tuesday, Wednesday, third day. तो middle में कौन है? B. So it is B. So option 2 is correct. Right? That's it. खत्म हो गया question. And we have these answers. Okay? Right? So now we have covered 4 questions in total. Right? So out of 16, quickly tell me, out of 16, how many marks have you scored up till now? Meanwhile, I'm taking you to the next question. All right. So out of 16, we have done 4 questions, 4 into 4, 16. What is your score? 16 on 16, Unnati, Tejaswi, Rhythm, Rashi, Ashutosh. All right. Great. So protagonist, आप अभी आए हो, no problem at all. You have scored 8. Nice. You have missed the previous question. No problem at all. But अभी भी अब से स्टार्ट करके भी आप लीड ले सकते हो, because 6 more questions are left. 6 questions और बचे हैं आज के सेशन में. ठीक है. चलिए, let's see who will be the winner. Now let's move on to the next question, question number 5. Now question number 5 is a standalone question of IPMAT Rohtak 2019. So IPMAT Rohtak में already हम 3 questions देख चुके हैं. This is the 4th question. Guys, already we have seen 3 questions. This is the 4th question on arrangements, but this is a different kind of question. So people, you understand data sufficiency. Data sufficiency पता है. So this question is a mixture of data sufficiency. Format is data sufficiency. Topic is arrangements. Okay. So question in front of you. Quickly find out the answer and post it in the chat box.
All right, so Ashutosh Sharma has already given his answer. Nice. Tejasvi, protagonist. Anupam. All right, lovely. Perfect. Good. Few more seconds and then we'll calculate what will be the answer, or we'll find out what will be the answer. चलिए start करें. ठीक है. Now, question given below has a problem and two statements. No, they are not two statements. So there are three statements. ठीक है? Misprint. So there are three statements numbered 1, 2, 3. As you can see, there are three statements giving certain information. Now you have to decide if the information given in the statement is sufficient for answering the question or not. So this is basically a type of data sufficiency question. So 5 persons A, B, C, D are sitting in a row. Who is sitting in the middle? So we know there are 5 people who are sitting in a row, and हमें middle में कौन बैठा है वो find out करना है, right? And we'll have to see to answer this question which of these statements will be required, right? अब क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें कब क्लियर है, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये भी क्लियर है. एक बार ऑप्शंस की तरफ देख लो. ऑप्शंस में बोल रहा है 1 and 2 together, 2 and 3 together, 1 and 3 together and 1, 2 and 3 together. ओके, तो एक 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो 2 स्टेटमेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो तीनों स्टेटमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, राइट? नाउ we understand this thing that in an arrangement of 5 people, 5 लोगों का अरेंजमेंट है अगर, if we can certainly say about the position of 4 people, let's say मैं बोलता हूं कि A यहां पे बैठा है, B यहां पे बैठा है, C यहां पे बैठा है and D यहां पे बैठा है. 4 लोगों को प्लेस कर दिया तो पांचवा तो क्लियरली प्लेस हो ही जाएगा. ठीक है, और इनफैक्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन आई डोंट हैव टू प्लेस ऑल ऑफ देम ऑल्सो, बट स्टिल पोजीशनिंग तो पता होनी चाहिए सबकी. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हिच स्टेटमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड सेकंड को अगर ट्रीट करता हूं, B इज बिटवीन E एंड C, B is between E and C and B is to the right of E. Now using these two statements, first and second, I'll be able to place B, E and C only. B is to the right of E, B is to the right of E and B is between E and C. अब इनके बीच में कौन बैठा है? Immediately right नहीं बोला हुआ. B is the only person who is sitting between E and C, ये भी नहीं बोला हुआ. These are the very important keywords. B is the only person sitting between E and C. B is to the immediate right of E. ये कुछ भी नहीं बोला हुआ. So मेरे को बस इनकी relative positions पता है. अब जो बाकी के A और D हैं वो कहीं पे भी आ सकते हैं. So I cannot answer the question using first and second statement. Okay? आगे चलते हैं. अब second and third को combine करते हैं. B is sitting to the right of E, ये बोला हुआ है, and D is between A and E. D is between A and E, something like this. But fifth person कहां पे है? मेरे को एग्जैक्ट पोजीशंस तो पता नहीं है ना इनकी. इनके बीच में कोई ना कोई हो सकता है. Once again ये नहीं बोला हुआ D is the only person sitting between A and E, right? So ये important keywords हैं guys. तो second and third से भी आंसर नहीं आ सकता. परफेक्ट, चलो फर्स्ट एंड थर्ड से क्या आंसर आ सकता है? B is between E and C, B is between E and C, ये रिवर्स भी हो सकते हैं, and D is between A and E, D is between A and E, right? एक ये केस बन गया. अब अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, B is between E and C and D is between A and E, D is between A and E. So will I be able to get the answer using first and third statement? Tell me yes or no. Okay, so all of you
I have presented both the cases in front of you. Will I be able to get this answer using statement 1 and 3? Yes or no? Tricky question है ना? So let's have a look at statement number 1 and 3 properly. ठीक है? So 1 क्या बोल रहा है? B is between E and C. Right? यहां पे कोई भी हो सकता है बीच में. Also, it can be interpreted like this. Right? Next, statement number 3 क्या बोल रही है? D is between A and E. अब D जो है A और E के बीच में है. डन. काफी लोगों गुड 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 वेरी गुड. जो नो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है. ठीक है. अब D is between A and E. पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? वन पॉसिबिलिटी कैन बी B, C, E, D and A. Another possibility can be, carefully देखना, D is between A and E. So मैं D और A को यहां पे बना देता हूं. Still you can say that D is between A and E because D is not the only person who can sit between A and E. इनके अलावा भी कोई आ सकता है. So this particular arrangement and this particular arrangement both are satisfying what is given in statement number 1 and statement number 3. Okay, समझ में आ गया? ठीक है. तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 को कंबाइन करने से भी डिफरेंट आंसर आएगा बिकॉज मिडल में कोई भी हो सकता है. राइट? ठीक है. सो प्लीज डू नॉट मिस ऑन द केसेस. ये गलती नहीं करनी, ट्रैप में नहीं फंसना. फर्स्ट एंड थर्ड कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. राइट? सो अरेंजमेंट्स के जो बेसिक्स है ना, अगर उन पे वर्क नहीं किया हुआ, ये जो कीवर्ड्स हैं, D is the only person between A and E, D is sitting between A and E, ये इनमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट? सो आई कैन से दैट ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं हो सकता. ऑब्वियसली ऑप्शन डी आंसर होगा ही होगा. नो नीड टू चेक इट. ऑलराइट, ग्रेट. So I think a lot of you have marked option D as the answer. 5 questions are covered. Evaluate your marks. Do not write your marks in the chat box, right? Let's move on to the next question. Okay? Now before I'll move on to the next question, एक छोटा सा और change करते हैं the way you are answering the question. ठीक है? So whenever you have the answers, keep them with yourself, right? I will tell you to post your answer, then only you post your answer. Do not post your answers as soon as you get it. ठीक है? तो इससे क्या होगा, और जो स्टूडेंट्स सॉल्व कर रहे हैं वो आपका आंसर देख के इन्फ्लुएंस नहीं होंगे. ठीक है? हाँ. सो सॉल्व इट, डू नॉट पोस्ट योर आंसर, एंड जब भी मैं बोलूंगा आपको अपना आंसर पोस्ट करने के लिए, देन ओनली यू पोस्ट योर आंसर. ठीक है? चलिए. नाउ नेक्स्ट विल बी अ सेट ऑफ 2 क्वेश्चंस. Question number 6 and 7, a very lengthy question, IPMAT Rohtak 2020. Exact question of IPMAT Rohtak 2020. On your screen, find out answer to both the questions which are at the bottom of the screen. Do not post your answer in the chat box.
Also, whenever you have the answers of both the questions, post done in the chat box. At least acknowledge कर सकते हो. जैसे ही आपके दोनों आंसर्स आ जाते हैं, post done in the chat box so that I will know how many students have the answer. One of the student, Rahul, I think you are asking that is this topic important for Indore? Yes, ये topic important है इंदौर के लिए because lately like last 4-5 साल से क्या हो रहा है? The 5 questions that IPMAT Indore gives from logical reasoning or data interpretation last 4-5 years से वो logical reasoning पे आ रहे हैं, ठीक है? And it's a single set of 5 questions. तो 5 क्वेश्चन का एक सिंगल सेट बहुत इजीली अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस पे बन सकता है. सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट. पीपल, व्हाट हैपेंड? आर यू नॉट डन विद दीज 2 क्वेश्चंस? काफी लेंथी सेट है ना. ओके, अगेन हम क्या गलती कर रहे हैं? वी हैव नॉट रेड दीज 2 क्वेश्चंस एंड आई थिंक हम इस पूरे सेट को, इस पूरे अरेंजमेंट को कंप्लीटली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? शायद ये मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, तो एक बार भाई क्वेश्चन पे भी नजर डाल लो, शायद आपका आंसर आ गया हो इन द मिडल ऑफ द अरेंजमेंट. ऐसा भी हो सकता है ना कि अरेंजमेंट कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए. All right, so Mr. Protagonist says he's done. All right. चलिए, 1 more minute I'll give you. काफी टाइम दे दिया है मैंने. 1 more minute I'll give you and then we'll move on to the analysis of this set. No, 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 Rahul. It's not that only data interpretation and arrangements are important. Other than that, there has been an instance जहां पे different type के questions पूछे गए हैं, ठीक है? So the entire logical reasoning, the questions like direction senses, blood relations, ये IPMAT इंदौर के लिए important नहीं है, but बाकी और सारे एग्जाम्स के लिए important है. Okay? Unnati, you will have to select one answer. Okay, so now all of you please post your answers in the chat box. Let's finalize the answers. Okay, so I'm giving you 30 seconds more to post your answers in the chat box, after which I'll start with the analysis of this. All right, good. All right, that's it. Only one student has the answer. No problem. This is slightly difficult. ठीक है, चलिए check करते हैं, analysis करते हैं. Okay, now 8 girls we have are sitting in a line facing north. एक सेकेंड में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूं. So, all right. I believe this much text will be visible to you. Right, visible है. थोड़ा सा स्क्रीन को zoom in कर लेना. So 8 girls MNOPQRST are sitting in a line facing north.
फेसिंग नॉर्थ, आई एम सॉरी, इस चीज का कोई रेलिवेंस नहीं है टिल द टाइम ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पे नॉर्थ की जगह अगर ईस्ट वेस्ट या साउथ भी गिवन होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। And likes different colors, fine, but not necessarily in the same order. I'll start reading from here. The one who likes, I hope you all are able to, the text is visible to all of you. ठीक है, अगर visible नहीं है थोड़ा सा zoom in कर लेना अपनी screen को, it will be visible. So the one who likes yellow sits fourth to the right of M. So I'll start from here. M. Fourth to the right. 1, 2, 3, 4. The one who likes yellow. सो मैं ऊपर पर्सन का नाम लिखूंगा एंड नीचे उसका कलर, ओके, राइट। सो द वन हु लाइक्स येलो सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। सो अप टिल दिस पॉइंट इट्स डन। नीदर एम नॉर येलो सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स। एम और येलो एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है, दैट मीन्स दे हैव, सो एम हैज एटलीस्ट वन पर्सन ऑन द लेफ्ट एंड येलो has at least one person on the right. ठीक है, क्लियर। एक सेकेंड, मैं इस अरेंजमेंट को दोबारा बना रहा हूं, थोड़ा सा स्पेशियस बना लेता हूं so that all of you will understand. So I'll start from the first statement again. The one who likes yellow sits fourth to right of M. So M, right? So 1, 2, 3, 4. So this is yellow, right? Now M and yellow, none of them is at the extreme ends, so that means M के left में कोई ना कोई बैठा है और yellow के right में कोई ना कोई बैठा है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chairs, 7 positions are already there. Now I just need one more position, ठीक है, and then we'll be able to complete the arrangement. Perfect. So यहां तक हम read कर चुके हैं। Next, N sits third to the left of R. एन भी नहीं पता, आर भी नहीं पता, इस चीज को, इस कंडीशन को साइड में अलग से लिख लेते हैं। सो एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। सो एन 1, 2, 3 एंड दिस इज आर। सो एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, दिस इज हाउ इट विल बी, ओके। आई एम डन अप टिल दिस। द नंबर ऑफ गर्ल्स सिट्स बिटवीन टी एंड वॉयलेट। टी एंड वॉयलेट के बीच में जितनी गर्ल्स हैं इज सेम एज एस एंड ब्लू। सो टी एंड वॉयलेट के बीच में जितनी गर्ल्स हैं इज इक्वल टू एस एंड ब्लू के बीच में जितनी गर्ल्स हैं। टी वॉयलेट एस ब्लू इनके बीच में, ओके, राइट। नाउ आई हैव दिस अरेंजमेंट। नाउ इफ आई गो बैक टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या थे? हाउ मेनी गर्ल्स आर बिटवीन एम एंड एन and T likes which color? So M और N को अरेंज करना है and T का कलर फाइंड आउट करना है। That's it, I'll stop there. Okay, चलिए वापस चलते हैं। Perfect. So यहां तक रीड कर लिया है, T and Violet के बीच में जितनी गर्ल्स हैं उतनी गर्ल्स S and Blue के बीच में है। Next, T sits to the immediate left of Black. T जो है वो Black के immediate left में है। So Black and T are adjacent. T sits to the immediate left of black. I have this information. मैंने नीचे लिख दिया, T sits to the immediate left of black. Done. Next statement, number of girls sitting between red and white is same as white and pink. So red and white के बीच में जितनी गर्ल्स हैं उतनी ही गर्ल्स white and pink के बीच में है, ओके। अब यहां पे व्हाइट कॉमन है, तो मतलब व्हाइट अगर बीच में है तो रेड जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे पिंक है, व्हाइट से रेड जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे पिंक है, ओके, राइट। सो दिस इज वन थिंग, परफेक्ट। नाउ P डज नॉट सिट एडजेसेंट टू T, सो P एंड T एडजेसेंट नहीं बैठे हैं, साइड में लिख दिया इसको भी। R likes violet color and O likes brown color. R likes violet. So इसको यहां लिख देते हैं, R likes violet and O likes brown.
राइट? ये दो चीजें पता है, तो आर वॉयलेट के साथ आएगा, ओ ब्राउन के साथ आएगा। ग्रेट। वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक्स येलो। एस और येलो के बीच में एक पर्सन है, एंड ठीक है, हु लाइक्स येलो, ठीक है। सो एस एंड येलो, येलो मुझे पता है कहां पे है, तो एस इधर बैठ सकता है या फिर एक चेयर इधर हो सकती है, ठीक है। परफेक्ट। एस डज नॉट लाइक रेड कलर एंड डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। अब लास्ट दो कंडीशंस को कंबाइन करके मैं क्या बोल सकता हूं, दैट एस विल नॉट सिट हेयर, यहां पे इधर नहीं बैठेगा, एस की पोजीशन यहां पे होगी। बिकॉज इफ आई मेक एस सिट एट दिस प्लेस, राइट, वन पर्सन सिट्स बिटवीन येलो एंड एस, अगर मैं एस को यहां पे बैठूंगा, 8 चेयर्स आर कंप्लीटेड एंड एस इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। बट यहां पे बोला हुआ है एस डज नॉट लाइक रेड कलर एंड डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, तो एस यहां पे नहीं हो सकता। तो इस वाली चेयर को अभी फिलहाल इरेज कर देते हैं एंड एस की पोजीशन ये हो जाएगी। क्लैरिटी है? डन? ओके, परफेक्ट। तो एस यहां पे आ जाएगा, वन पर्सन सिट्स बिटवीन येलो एंड एस, एस डज नॉट लाइक रेड कलर, एस को रेड कलर पसंद नहीं है, एंड डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। परफेक्ट हो गया। अब भाई सारी कंडीशंस रीड कर ली हैं, जो लिखा है वो यहां पे लिखा हुआ है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, तो इसको पकड़ते हैं एंड मैं चेयर के नंबर्स लिख देता हूं। चेयर नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अभी 8 नंबर चेयर पता नहीं है, यहां लेफ्ट में हो सकती है, राइट में हो सकती है, पता नहीं है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस एन एंड आर। एन जहां पे भी बैठा है, आर उससे 2 प्लेसेस अवे है। सो कैन एन सिट एट चेयर नंबर 1? नो, एन कैन नॉट सिट एट चेयर नंबर 1, ठीक है, बिकॉज आर के लिए ये पोजीशन आएगी विच इज नॉट पॉसिबल। कैन एन सिट एट चेयर नंबर 3? अगर एन चेयर नंबर 3 पे है तो आर चेयर नंबर 6 पे हो जाएगा, विच इज पॉसिबल। क्या एन चेयर नंबर 5 पे हो सकती है? अगेन इट इज पॉसिबल, राइट। चेयर नंबर 6 पे नहीं हो सकता एन, राइट, ठीक है। सो आई हैव दिस पॉसिबल प्लेस फॉर एन, सो एन कैन बी एट दिस प्लेस। अगर एन को मैं यहां पे डालता हूं तो आर यहां पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, परफेक्ट। नाउ एन यहां पे भी हो सकती है एंड आर के लिए सबसे राइट मोस्ट पोजीशन आ जाएगी। सो दो पॉसिबिलिटी है इस चीज के लिए। आर को वॉयलेट कलर पसंद है, ओ को ब्राउन, छोड़ देते हैं अभी। अब ये चीज टी वॉयलेट एस ब्लू, ऑल राइट, रेड व्हाइट एंड व्हाइट पिंक। नाउ टी एंड वॉयलेट एस एंड ब्लू, एस यहां पे है, ओके। नाउ एस एंड ब्लू के बीच में जितनी है उतनी टी एंड वॉयलेट के बीच में है, ये भी अभी हम नहीं डाल सकते, ओके। आर लाइक्स वॉयलेट कलर, सो कैन आई पुट आर एंड वॉयलेट कलर? सो आर का कॉम्बिनेशन वॉयलेट कलर से होना चाहिए। लेट्स डू दैट। टी एंड ब्लैक एडजेसेंट है, ओके। टी एंड ब्लैक को अगर पुट करने की कोशिश करें, सो यहां पे नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, ओके, पॉसिबल है, राइट। सो आर वी स्टक समवेयर?
फाइन, अगर मैं n को यहां पे प्लेस करता हूं तो r इधर आ जाएगा, क्या r, ओ लवली लवली, नाउ गॉट इट, ठीक है। सो गाइज वी आर नॉट स्टक हियर, सो कैन आई प्लेस n हियर, अगर मैं n को यहां पे प्लेस करता हूं तो r यहां पे आ जाएगा, r को येलो कलर, नो, r लाइक्स वायलेट कलर, सो n कैनॉट कम एट चेयर नंबर 3, n चेयर नंबर 3 पे नहीं बैठ सकता, तो चेयर नंबर 1 पे नहीं बैठ सकता n, चेयर नंबर 3 पे नहीं बैठ सकता, तो n के लिए कौन सी पोजीशन होगी, n के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है, दैट इज चेयर नंबर 5, ओके, सो n हैज टू सिट एट चेयर नंबर 5, r के लिए कौन सी पोजीशन आ जाएगी, विल हैव टू क्रिएट अनदर चेयर एंड दिस विल बी द प्लेस फॉर r, ओके, सो n के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बचती है, दैट इज दिस, एंड r विल बी दिस, एंड r will like violet color, so r को violet color दे देते हैं, so I have used this statement, I have used this statement, दो कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, so can I say that फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, so क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारे पास, how many girls are sitting between m and n, so m और n के बीच में कितनी गर्ल्स हैं, m and n के बीच में there are two girls, so we already have the answer for the first question, so there are two girls between m and n, done। अब next is t का कलर फाइंड आउट करना है, t का कलर क्विकली फाइंड आउट करते हैं, ओके, ना t एंड ब्लैक एडजेसेंट होने चाहिए, तो t यहां पे आ सकता है, ब्लैक इधर हो जाएगा, t यहां पे आ सकता है, ब्लैक इधर हो जाएगा, t यहां नहीं आ सकता, t यहां पे आ सकता है, ब्लैक हो जाएगा, तो t के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। Now I will be going ahead with this thing. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। Now T and violet के बीच में जितनी गर्ल्स है उतनी गर्ल्स S and blue के बीच में है। तो T कहां कहां पे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल T यहां पे नहीं हो सकता, बिकॉज T and violet के बीच में कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 6 गर्ल्स। तो S और ब्लू के लिए कोई जगह आएगी नहीं, S यहां पे है, ब्लू के लिए कोई जगह आएगी नहीं, बिकॉज S और ब्लू के बीच में भी 6 गर्ल्स होनी पड़ेंगी। सो T कैन नॉट कम एट दिस प्लेस, मैं T के लिए मार्क कर रहा हूं, T चेयर नंबर 2 पे नहीं आ सकता, क्या T चेयर नंबर 3 पे आ सकता है? अगर मैं T को चेयर नंबर 3 पे पुट करता हूं तो T और वॉयलेट के बीच में कितनी गर्ल्स होंगी? 1 2 3 4, तो S एंड ब्लू के बीच में भी 4 गर्ल्स होनी चाहिए, S बेचारा चेयर नंबर 4 पे है, तो S और ब्लू के बीच में 4 गर्ल्स होंगी, तो 1 2 3 4, S को सबसे राइट में एक और एक्स्ट्रा चेयर पे बैठना पड़ेगा, सो T की ये वाली पोजीशन भी पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ T के लिए सिर्फ यही पोजीशन पॉसिबल है, बिकॉज T के राइट में ब्लैक कलर होना चाहिए, T चेयर नंबर 7 पे भी नहीं हो सकता, तो T के लिए एक ही चेयर पॉसिबल है, दैट्स इट, दोनों क्वेश्चंस खत्म। T का कलर क्या हो गया? इट इज येलो कलर, ऑलराइट, फाइन, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी येलो कलर, एंड यू डोंट हैव टू सॉल्व इट फर्दर, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ओके, राइट, सो ओनली वन स्टूडेंट कुड आंसर दिस क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नाउ पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Now this question is taken from IPMAT Rohtak 2020. Rohtak 2020 का क्वेश्चन है। Yes, protagonist, it was tough. Now this one is very easy. Rohtak 2020. Quickly finish it off. जल्दी। And as soon as you get the answer, you can post it in the chat box. बहुत easy question है। Unnati, I would say that looking at the length of the question, you can judge, you can decide. ठीक है, ये क्वेश्चन लेंदी था, I'll give it the last priority. ओके, लास्ट प्रायोरिटी दूंगा मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। सी, दिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ स्पीड, यहां पे हमें सीक्वेंस में क्वेश्चंस नहीं करने होते, सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई विल गिव यू सम टिप्स हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम। Come on people, quickly post your answers.
All right, nice, very good. चलिए start करें. Already 4 students have given the answer. Perfect. Now 7 boys are standing in a row. Kavikant is standing to the left of Anurag. So Anurag, Kavikant is standing to the left of Anurag, but to the right of Bipin. So Kavikant is to the left of Anurag, but right of Bipin. Done. Next statement. Jayant is standing to the right of Gaurav, but left of Bipin. So Jayant is to the left of Bipin, and Jayant is to the right of Gaurav. Okay. Similarly, Komal is standing to the right of Anurag. Komal is to the right of Anurag and to the left of Ramu. Komal is to the left of Ramu. That's it. इतना ही arrangement था ये. Find out क्या करना है. Who is standing in the middle? Kavikant is standing in the middle. Option C is the correct answer. And now all of you post your score. Score कितना हो चुका है? We have done 8 questions, 32 marks. So out of 32, how much you have scored? Quickly post it in the chat box. Jaldi. All right. Now let's move on to the next question, question number 9 and question number 10. So this is again from Rohtak 2020, a question on arrangements, and it's not a single question but 2 questions. Okay, so a set of 2 questions. So last 2 questions, very easy. Find out the answer and post done in the chat box. Answers likhne nahi hai is baar, you just have to post done in the chat box. Nice. So 24 is the highest. Anupam and protagonist. Tejasvi 19, Ashutosh 19, Om 24. Nice, very good. So all of you, last 2 questions. Once you are done, post done in the chat box. Once you have the answer of both these questions, and then we'll look at the analysis and then come back to these questions to check who among you is correct. So post done whenever you are done with both the questions. Ananya, give me few minutes. Once we'll finish this question and then I'll take your query. Okay, Ashutosh is done. Very good, Ashutosh. Post done in the chat box. Anyone who is done with this? Okay, another 30 seconds and then I'll ask you to post your answers. Just be ready to post your answers. 30 seconds and then I'll ask you to post. Okay, people, now you can post your answers, all of you.
कैन पोस्ट योर आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एंड लेट्स सी हाउ यू हैव डन इन दीज टू। सो आई विल मूव ऑन टू द एनालिसिस स्क्रीन। 7 cars of different companies are given, are standing facing east. Again, does not matter. All cars are facing the same direction, north, south, west, east. मैं अरेंजमेंट्स अपने नॉर्मल तरीके से ही करूंगा, ठीक है। कैडिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो। फार्गो, कैडिलैक नेक्स्ट टू द राइट, फार्गो के इमीडिएट राइट में कैडिलैक है। Fargo is fourth to the right of Fiat. Fourth to the right. 1, 2, 3 and then Fiat. So Fargo is fourth to the right of Fiat. Maruti is between Ambassador and Bedford. Ambassador भी नहीं पता, मारुति भी नहीं पता, बेडफोर्ड भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, छोड़ देते हैं। Fiat, which is third to the left of Ambassador. So Fiat third to the left of Ambassador. So Ambassador will come here. Is at one end. Fiat is at one end. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7th car will come to the right of Cadillac. अब एक previously जो statement छोड़ दिया था उस पे चलते हैं. So Maruti is between Ambassador and Bedford. 3 स्पेसेस बचे हैं, मारुति इज बिटवीन, सो मारुति यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इज बिटवीन एम्बेसडर, एक सेकेंड, सॉरी, एम्बेसडर, मारुति इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, सो बेडफोर्ड कहां पे आ जाएगी, इधर, राइट, ठीक है। नाउ 1 कार इज लेफ्ट, कौन सी कार है, क्या नाम है उसका, कैडिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, सो मर्सिडीज इज लेफ्ट, मर्सिडीज हैज टू कम at the extreme right end of the row. Okay, that's it. Question is over. Let's move on. Look at the first question. Which of the cars are on both the sides of Cadillac? Cadillac के दोनों तरफ कौन कौन है? So Cadillac के आसपास Fargo and Mercedes. Okay, so Fargo and Mercedes. Option C should be the correct answer of this. Second question. Which of the following statement is correct? Maruti is नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, चेक करते हैं। मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, फर्स्ट स्टेटमेंट ही मिल गई, करेक्ट है, टाइम सेव हो गया। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए एंड दैट्स इट, परफेक्ट, क्वेश्चंस फिनिश्ड। ओके, सो पीपल, नाउ all of you please put on your scores. One very important information for all of you, I'll be taking your journal queries, don't worry. One important information, JIPMAT 2025 marathon is on the cards. So the countdown has already begun. So please mark your calendar, 21st of April, 12 noon. दोपहर में 12 बजे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, right? 21st of April. This will be a marathon session for JIPMAT. All right, ठीक है. So thank you very much. No, not yet. I'm taking your journal queries. So मैं ऑलरेडी क्वेरीज देख चुका हूं, नो नीड टू पोस्ट एनी जर्नल क्वेरी, जस्ट कीप पोस्टिंग योर स्कोर्स, एंड जो भी 2-3 क्वेरीज आई थी मैं क्विकली आंसर दे देता हूं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ LRDI। नाउ LRDI अगर जिपमैट, रोहतक इन दोनों एग्जाम्स के लिए पूछ रहे हो तो एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो अमंग देम इफ आई लुक एट द लास्ट फ्यू इयर्स, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, right? So prepare these things properly. Secondly, what should be your strategy in the last few days? So 21st April, maximum 22nd April तक mock लिखने हैं आपको, उसके बाद mocks नहीं लिखने, right? This is for a person whose preparation is going well, right on time, ठीक है, okay? So 21st 22nd April तक अपने mocks लिखते हैं, and the students who are unable to improve, अब ये सबके लिए है जिनके IPMAT मॉक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बट मॉक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ये उनके लिए भी है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज नाउ स्टॉप टेकिंग मॉक्स एंड स्टार्ट एनालाइजिंग मॉक्स, ओके।
हमारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बट मॉक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। रीजन क्या है इसका? हम टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट में, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब लास्ट 1-2 दिन जो बचे हैं आपके मॉक्स के लिए, मॉक्स दो, एंड मॉक्स में जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो एनालाइज करो। मॉक्स में मिस्टेक को एनालाइज करो, किस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो वो एनालाइज करो, एंड फाइंड आउट योर वीक एरियाज। सो इन द नेक्स्ट 3 or 4 days, 21st April, 22nd April, 23rd April, इन 3 दिन 24th April मैक्सिमम अपने वीक एरियाज पे वर्क करो, राइट? अब लास्ट 1 वीक में हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, ठीक है, राइट? सो if you will ask what we need to do in the last 1 week, I have already told you what you need to do, because you cannot do everything that can be done in 1 year or 1 month in 1 week, ठीक है? सो जितना टाइम बचा है अब बस उसकी रिस्पेक्ट करो। मेक श्योर दैट जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है एग्जामिनेशन में, राइट, उसको फॉलो करो स्ट्रैटेजी को। लास्ट के 4-5 दिन में कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे आपका जो माइंड का मेंटल पीस है, कामनेस है, वो डिस्टर्ब हो जाए। ओके, सो मेंटेन योर कामनेस, मेंटेन योर पीस ऑफ माइंड, सो दैट जो भी आपने अभी तक प्रिपेयर किया है उस चीज को आप डिलीवर कर सको। इंपॉर्टेंट क्या है? अब डिलीवर करना, डिलीवर करने का टाइम आ गया है। ओके, सो लास्ट फ्यू डेज में जस्ट कीप रिवाइजिंग फ्यू टॉपिक्स। ओके, जिनको अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाइबल हैं वो अपने वीक एरियाज पे वर्क करें। लास्ट 2 दिन में कुछ ऐसा अलग नहीं करना आपको, ठीक है? आई बी कीप कमिंग विद द स्ट्रैटेजीज। मैराथन सेशन में मिलते हैं अब 21st of April को, राइट? 12 o'clock मैराथन सेशन स्टार्ट होगा, इन विच quant, verbal and LRDI, all these 3 components will be there. We'll see you on Monday. Have a nice time. Bye bye. No, please don't skip cubes and dices. Don't do that.